Students, welcome to the channel Social Science with Dipankar. In this video, we are going to learn how to locate important places as per the board syllabus. Right? We will not only locate the important places, we also locate the important physical features. Today, we'll start with the second chapter of your geography textbook, Physical Features of India. But before that, once again, I would like you to just revise the states, where which state is. So I'll just fill it up. This is the state, this is the union territory of Ladakh, okay, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana. Here we have Delhi, यूपी, ओके. यहाँ हम यूपी के ठीक नीचे जो है इधर मध्य प्रदेश, और इधर जो साइड में एमपी के पार्ट ही था, पहले एमपी का ही पार्ट था, ये छत्तीसगढ़, ठीक है. और यहाँ पर जो है यूपी के और फर्दर ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे बिहार, फिर आपका आता है नीचे बिहार का झारखंड, इधर वेस्ट बंगाल, ओके, इधर उड़ीसा, इधर जो है आपका आंध्र प्रदेश, इधर जो है आपका स्टेट है आपका तेलंगाना, ठीक है, महाराष्ट्र, इधर गुजरात, राजस्थान, ओके, यहाँ पर कर्नाटका, इधर जो है गोवा, इधर आपका जो है तमिलनाडु, केरला, ओके. अब चलते हैं इधर, ये सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, इधर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इधर असम, इधर है मेघालय, ठीक है. ये है बांग्लादेश, इधर हमारी नेबरिंग कंट्री, इधर ईस्टर्न पार्ट में, और इधर जो है आपका नागालैंड, इधर आपका आता है. तो स्टूडेंट्स, आज हम जो मैप पॉइंट्स लोकेट करने जा रहे हैं, जो फिजिकल फीचर्स लोकेट करने जा रहे हैं, वो आपके बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है. मैंने आपको सबसे पहले दिखाया कि कौन कौन से स्टेट कहाँ पर है. वो फिल करने के बाद जो है अब हम चैप्टर 2 का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, राइट. इसमें आपका कुछ रेंजेस जो है, आप इसमें सिंबल बॉक्सेस जरूर यूज कर सकते हैं. जैसे रेंज के लिए जो है सिंबल बॉक्स, आप इस तरीके से जो है रेंज के लिए सिंबल बॉक्स आप यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं इसको शो कर रहा हूँ कि जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, दे locate but they don't use the symbol boxes. So for ranges we generally use this, mountain ranges, for mountain ranges, and for peaks, okay, so for peaks we'll be showing like this. These traditional symbols have to be used, okay. So let me start with the Karakoram range, the highest range of the country. इसको थोड़ा सा थिक करना है, और यहाँ पर जो है आपको कराकोरम रेंज जो है उसको लोकेट करना है इधर, और मैंने यहाँ लिखा है कराकोरम रेंज, ठीक है. कराकोरम रेंज के ठीक नीचे जो है यहाँ पर आपका एक और रेंज है जो आपका एज पर द बोर्ड सिलेबस आना है. इधर जो है आपका, ये आपका जस्कर रेंज. कौन सा रेंज है? जस्कर, ठीक है. तो आप देख सकते हैं मैप में मैंने यहाँ लोकेट किया हुआ है. सबसे ऊपर जो है यहाँ पे कराकोरम रेंज है. कराकोरम रेंज के ठीक नीचे जो रेंज है वो आपका जस्कर रेंज है. जस्कर रेंज के बाद जो है एक और सबसे जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयस का, वो है आपका शिवालिक्स, ओके.
This is the Shivaliks. The Shivaliks. Okay, three ranges are shown, and now I would show you other ranges. The mountain range that is in Rajasthan. So you can locate it like this. Here, this is the Aravalli range. Remember, we can take certain points of references, like certain points to locate any item on the map. So what we have to do, like we can draw the Tropic of Cancer. Okay, roughly I've drawn over here the Tropic of Cancer, dividing the country into almost two equal halves. Okay, into almost two equal halves, and you have to keep in mind this Tropic of Cancer, and see, the Vindhya range is there. Okay, Vindhya range is there. A part of it is cutting across the Tropic of Cancer, and here the range that we have is Vindhya range. Okay, just below it we have another range which is marking the northernmost boundary of the Deccan Plateau. Okay, which is marking the northernmost boundary of the Deccan Plateau. This is Satpura range. Which range it is? Satpura. Okay. The two ranges here, the western, other two ranges, the Western Ghats, we can draw a regular line here. Okay, though there are gaps. Okay, but these are more regular. Okay, this is the Western Ghat, the Western Ghat ranges. Okay, and the Eastern Ghat ranges. Here is the Eastern Ghat ranges. This is more dissected because most of the rivers are flowing this direction. So they have done erosional activity. So as a result of which, there are gaps you can see. These are more broken, right? So this is the Eastern Ghats. Clear? In between the Aravalli and the Vindhya range, we have the Malwa Plateau. The plateau can be shown like this. The Malwa Plateau. Okay, and this part you can see here, this part is the Deccan Plateau. Okay, and this part is here, which is marked on the western side the Aravallis and the southern side the Vindhyas. This is the Central Highlands. This part is called the Central Highlands. So the whole peninsular plateau, right? This whole part is the peninsular plateau. The peninsular plateau has been divided into two parts. The part above the Vindhyas, that is the Central Highlands, right? And the westernmost boundary is marked by the Aravallis, and further east we have the Bundelkhand and the Bagelkhand. Okay, that is marking the eastern boundary of the Central Highlands. And the Deccan Plateau is this part is the Deccan Plateau, which is flanked by the Western Ghats on its west side and the Eastern Ghats on its east side. Okay, further we go, we have the Chota Nagpur Plateau, then the Meghalaya hills over there, that is marking the Garo Khasi Jaintia range. Okay, the Garo Khasi Jaintia range. So we'll go as per the board syllabus only, as per the class 9 syllabus only. Okay, so this we have to see. The Chota Nagpur Plateau region is there. The Chota Nagpur Plateau. All right. And the northern plains, you can see northern plains are these areas are the northern plains here. Okay. The alluvial wide flat line that can be seen there. Okay. And this part is the peninsular plateau.
ओके, चलिए हम लोकेट करेंगे कोस्टल प्लेन्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो कोस्टल प्लेन्स एज पर दी जो बोर्ड सिलेबस है आपका, उसके हिसाब से जो कोस्टल प्लेन्स हमें लोकेट करना है। देखो यहाँ पर जो है हमें पता है कि महाराष्ट्र का आपका कोस्ट है, जो महाराष्ट्र का कोस्ट है वो इधर से अगर हम बात करते हैं गोवा तक, ठीक है, गोवा तक जो है वो आपका कोंकण कोस्ट आता है। कौन सा कोस्ट आता है? कोंकण। और इधर जो है गोवा के साउथ ऑफ गोवा के बाद जो है एक यहाँ पे, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको मैं बता रहा हूँ, कन्नड़ कोस्ट, जो कि केरला का सॉरी जो आपका कर्नाटका का जो कोस्ट है इधर, और इधर कुछ पार्ट कर्नाटका का भी है, और जनरली इसमें जो है लार्जली किसका पार्ट आ जाता है, जो केरला का जो कोस्ट है वो है आपका मालाबार कोस्ट। ओके, तो अभी देख सकते हैं, you have to remember that Maharashtra coast, okay, and the Goa coast. Okay, this will be this will be marked as Konkan coast, and south of Goa we have the Kannada coast, and further south we go the coast of Kerala, which is the Malabar coast here, and here till almost from the coast of Odisha to almost the middle of it, the Visakhapatnam part, Andhra Pradesh, right? This part is the northern circle, and this part the Coromandel coast. So you have to remember where which coast is the northern circle. This coast is there on the eastern side, and down we have on the eastern side only the Coromandel coast, and on the western side, right? On the western side we have the Konkan coast and the Malabar coast as per the syllabus. Okay, then the next that we are going to locate will be the rivers and the lakes. Okay, let's start. So the rivers that we are going to locate, the major rivers, okay, the Narmada river you can see, and the Tapi. Here we have in the coast of Orissa, from the state of Orissa we have from the central highland, it is falling towards the east, it is flowing towards the east. This is the Mahanadi river. Okay, and we have the Godavari here, which is the longest river in the southern part of the country, which is also called the Dakshin Ganga. And here we have the Krishna river, and here we have the Kaveri. Mostly these rivers will be asked from you to locate. You have to just locate, you have to identify these rivers, not for locating, for identifying them. The rivers will be marked there, you have to just identify them, right? The Ganga river, okay. So the children, the next we are going to locate the lakes. Okay, the first lake that we are going to locate, you can use the symbol box for locating the lakes, like this, some irregular shape. Okay, you can draw. This is for lake. So here Wooler Lake in the Union Territory of Jammu and Kashmir, and we have the Sambal Lake in Rajasthan, and Tamil Nadu, this extreme
in the northeastern part we have the Pulicat Lake, and we have the Chilika Lake there. In the state of Odisha, the Chilika Lake. So in all, we have to do these many lakes only. The Wular Lake in Rajasthan, and these will be asked to locate. Okay, you will be asked to locate the lakes. Sambar Lake, which is a saltwater lake. Wular is the largest freshwater lake. Chilika is yet another saltwater lake. Pulicat Lake is there. Okay, so we can see these are the lakes that we have to locate, and I think this is as per the syllabus. Right? Range we have the mountain peak K2. Okay, उसके बाद जो है हमारे पास और जो पीक्स हमें लोकेट करना है, एक है इधर सिक्किम में कंचनजंगा, राइट, कंचनजंगा पीक जो है इधर सिक्किम में आपको लोकेट करना है. ऑलराइट, फिर अनाईमुड़ी जो है वेस्टर्न घाट के एकदम साउथ पे, इधर ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला, एकदम पॉइंट में है, एकदम केरला के यहाँ पर. ये आप शो कर सकते हैं. इधर आपका है अनाईमुड़ी. तो ये पार्ट आपके रह गए थे वो सेकंड चैप्टर से, बीच में हमने ड्रेनेज स्टार्ट कर दिया था. मुझे लगा कि ये पीक्स वाला पॉइंट जो है वो रह गया था, तो इसलिए बाद में हमने इसको ऐड कर दिया. ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास लास्ट चैप्टर से आता है, पॉपुलेशन चैप्टर से, उसको हम डिस्कस करेंगे. में हम लोकेट करेंगे माउंटेन पीक्स. ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम यहाँ पर जो काराकोरम रेंज जो हमने बताया था हाईएस्ट रेंज, उसमें सबसे ऊपर जो है यहाँ पर आपका कौन सा रेंज है बच्चा? अगला जो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉपुलेशन चैप्टर से है. सो इसमें क्वेश्चन जैसे पूछे जा सकते हैं, विच इज द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. सो बिहार, वेस्ट बंगाल, these are the states which are with the highest population density. And we can also be asked the question, which is the state with the lowest population density? Arunachal Pradesh, right? You can locate. And here Kerala has been located, which is the state with the highest literacy rate. Mizoram is also one of the states, right, which is having the highest literacy rate. Plus Kerala is also having the highest sex ratio, right? तो पॉपुलेशन, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज की बात करें तो दोनों में डिफरेंस है. पॉपुलेशन साइज मीन्स टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए प्लेस. डेंसिटी मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग पर यूनिट एरिया. नॉर्मली ये स्क्वायर किलोमीटर में एक्सप्रेस होती है. ओके, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आप जरूर ध्यान रखना कि डेंसिटी का क्वेश्चन है या ये पॉपुलेशन साइज का क्वेश्चन है. अगर हम पूछते हैं विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री, तो यहाँ पर मोस्ट पॉपुलस स्टेट में जो है यूपी जो है मोस्ट पॉपुलस. ओके, इस तरह से हम इसको करेंगे. तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा जा रहा है या पॉपुलेशन साइज पूछा जा रहा है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल, राइट? Population density, that gives a more clear picture because it is telling us about how people are distributed per unit area. Okay, जो अगला जो है हम मैप फिल करने जा रहे हैं, चैप्टर आपका क्लाइमेट चैप्टर से है, जिसमें हम डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स, राइट. दो तरह के मॉनसून विंड्स ब्लो करते हैं. एक है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स ड्यूरिंग द विंटर मॉनसून और एक है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ड्यूरिंग द समर मॉनसून, राइट. तो ये डायरेक्शन हमें इस तरह से लोकेट करना है, इसके तरह से शो करना है. ये आपका साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है. ठीक है, ये इक्वेटर को क्रॉस करती है और राइट की तरफ मूव कर जाती है, तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, राइट. और जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड जो होती है वो इस तरीके से, इसका डायरेक्शन आपका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स, जो आपका विंटर मॉनसून के टाइम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स, और ये जो है समर के टाइम, समर मॉनसून के टाइम.
ओके, ये ध्यान रखना है। जो विंटर के टाइम, इसी को ही कहते हैं मानसून, सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ब्लो करती है, दैट विल बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द समर मानसून बाय साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। इसमें हम एक और क्वेश्चन, एक तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें द स्टेट और द रीजन विद लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो ये आपका जो डेजर्ट रीजन है, थार डेजर्ट वाला जो इलाका है, वो लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल। ओके, और यहाँ पर जो आपका लद्दाख वाला जो रीजन है, लद्दाख वाला जो आपका रीजन आता है, ये आता है आपका लेस देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल। ओके, नॉर्मली यही बच्चे गलती करते हैं कि आप सबसे अगर लीस्ट रेनफॉल रीजन है तो वो है लेह लद्दाख वाला रीजन, जहाँ लेस देन 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। ओके, और वहीं पर आप देखोगे कि जो थार डेजर्ट वाला इलाका है, यहाँ पर जो है कभी कभी फ्लैश फ्लड भी आते हैं इधर, तो 20 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है, लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है यहाँ पर होती है। और सबसे ज़्यादा बारिश वाले इलाके अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो मेघालय, जो चेरापूंजी और मौसिनराम जो है, सबसे ज़्यादा रेनियस्ट रीजन है। ठीक है, मेघालय हिल्स में, मेघालय हिल्स। और एक है आपका ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, तो रेनियस्ट रीजन्स, more than 400 centimeter rainfall takes place there. Okay, rainiest regions. So you might be asked questions like this: locate the regions where we have less than 10 centimeter rainfall. Leh Ladakh region is there, and locate the region where we have less than 20 centimeter rainfall. The Thar desert of Rajasthan is there. Which are the rainiest regions where we receive the maximum amount of rainfall, more than 400 centimeter rainfall happens? There we have the मेघालय हिल्स। ऑलराइट, तो बच्चों इसमें जो रेनियस्ट रीजन्स है, एक तो मेघालय हिल्स वाला रीजन, जो मौसिनराम चेरापूंजी वाला पार्ट है, इधर सबसे ज्यादा बारिश होती है, और दूसरा है वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि ये विंडवर्ड साइड है। आप देख रहे हो कि जो मैंने ये डायरेक्शन भी लोकेट किया है साउथ वेस्ट मानसून विंड का ड्यूरिंग द समर मानसून। ओके, ये आके यहाँ स्ट्राइक करती है, और सबसे ज्यादा बारिश, क्योंकि ये इट इज लाइंग अक्रॉस द पाथ ऑफ द रेन बेरिंग winds. Now let me tell you, are we all clear with this? We are talking about the questions, the regions where we have less than 20 centimeter rainfall, the Leh Ladakh region, and less than 10 centimeter, the least rainfall region, that is less than 20 centimeter rainfall, the Thar desert region, and less than 10 centimeter rainfall. Okay, the the lowest rainfall happens there in the Ladakh region. Okay, the rainiest regions we have the Meghalaya hills, the Cherrapunji, and the Mawsynram. Mawsynram is the world's rainiest place, and here another region where we receive the maximum, the highest rainfall, more than 400 centimeter rainfall we receive. So this is all from the chapter 4 climate, and we have also discussed all the questions, all the map skill questions from all your chapters, right? In case anything is left, you can send your questions. Any doubts still left, you can write down your questions also. I'll get back to you. As I say again and again, that my main purpose is to clear your doubts, right? So hope you have found the video very useful, and please do tune into the channel for more interesting videos. I'll come up with more information and more informative videos that will be there, that will be helping you score well in your social science. So that's it from me now. Thank you so much.